and his strength was to preoccupy 400 employees. If someone had not been doing well, गोटे कंपनी रे जदि कई लोक भल परफॉर्मेंस करू नथिला ताले मीटिंग रे ता मिस्टेक टाको रेक्टिफाई करा जाउथिला. The employees said that was insulting. ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ରେ ତାଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟାକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ ଏଇଟା one type of insulting and they should be pulled aside individually to be told of the inefficiency. ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଫଲ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟେବିଲିଟି କି ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ଫଲ୍ଟ କୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରନି ଆମକୁ ଆସାଇଡ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡାକି ନେଇକିରି ଯଦି କରେକ୍ସନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ପେଭ୍ ଅସ୍ ସର୍ଟନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବେନେଡିକ୍ସନ ଅର ବେନିଫିଟ. ଆମେ ଧରାଯାଉ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ କିଏ କରିଛି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲା କହିବି ତମେ ଏକ୍ସାମ ପେପର ଦେଲ ମ୍ୟାଥର ତମର କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯଦି ସେଟା ସାର୍ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ନୁହେଁ କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାର୍ କାହିଁ ଆମକୁ କ୍ଲାସରେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର କରୁଛି ଆମକୁ ସେପାରେଟ ଡାକି କହିବା କଥା ନା ନା ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଲେ ବି ଆମ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ. So but in today's world you cannot afford to do that every time. କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତମେ ଜଣେ ଜଣକୁ ପର୍ସନାଲି ଡାକିକିରି ତାଙ୍କର କିଛି ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କରେଇ ପାରିବନି. Besides, I figured that criticizing someone in a meeting was for the benefit of all present and everyone could learn from that individual's mistakes. It is the view of Sam Pitroda. That means if anyone is committing any mistake, that mistake must be actually revealed before all, by which through the rectification each and everybody must learn a lesson not to do mistakes further. That was the viewpoint जोटा कि सिला साम पेत्रोदांकर जे प्रकृति रे जदी मीटिंग बाबद रे अमेर कार करेक्शन आनिले गोटे ग्रुप रे कार करेक्शन आनिले टोटली ग्रुप पई सेटा कोन देला बेनिफिट देला. It was then that I learned how Indians do not differentiate between criticizing an idea and criticizing an individual. पिले कुह आम इंडिया रे किछि अछंती लॉ मेकर लॉ को तैयारी कले आमर किछि अछंती लॉ को एग्जीक्यूट करूछंती आउ किछि अछंती लॉ को गाइड करूछंती. सेति पई लेजिस्लेचर अछि एग्जीक्यूटिव अछि जुडिशियरी अछि. आमे जदि आम इंडिया रे वर्तमान कौन सी नियमटा इम्प्लीमेंट होबो आमे काहा को ब्लेम करूचे मोदी की मोदी करूचे ना नहीं किंतु एक्चुअली पिले मन रख जेतेबेले गोटे प्रिंसिपल को अपोज करिबा आउ गोटे मैन को अपोज करिबा ता देरे फरक अछि. गोटे प्रिंसिपल को अपोज करिबा गोटे मैन को अपोज करिबा ता देरे फरक अछि. आमे कोन कले देखो गांधी जी व्यू देइतिले ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस गांधी जी का व्यू को आमे प्रेफर कले किंतु किछि लोक गांधी की अपोज करी शूट कले ना नहीं. तेणु करी देख बहुत लोक व्यू को आमे प्रिंसिपल को मानु किंतु तांको इंडिविजुअली मानु ना बहुत लोक को आमे इंडिविजुअली मानु किंतु तांको प्रिंसिपल को मानु ना. So students, so in a group if you tell someone that his idea is no good he automatically takes it personally and assumes that you are criticizing him. Pile law is not made by a single person in a democracy. गणतंत्र शासन में गोटे लोक नियम तैयारी करछि कि हमर पार्लियामेंट रहिछि लॉ पास होला परे जाउछि एग्जीक्यूटिव पाखको आउ एग्जीक्यूटिव रा अप्रूवल परे परे पुनी इंप्लीमेंटेशन हला परे परे ताकू गाइड करूछंती कि ना सुप्रीम कोर्ट वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल. हमर तीनटा फेज रे लॉ पास करा जाय. फर्स्ट होछि बिल सेकंड हला एक्ट थर्ड होछि लॉ. जेतेबेले तमे कोन सी लोकसभा राज्यसभा रे गोटा बिल की सैंक्शन करै परिलो तापरे जाउछि कोउठी राष्ट्रपति का अप्रूवल पई राष्ट्रपति का अप्रूवल परे से बिल हे गेला एक्ट एवं जेतेबेले बिल टा एक्ट टा इंप्लीमेंटेशन हो गेला सेटा हला लॉ. सेतेबेले जे तमे बिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करि परिबो ताकू सुप्रीम कोर्ट दरकार पड़ले अनकॉन्स्टिट्यूशनल बा इनवैलिड बोले डिक्लेयर करि परिबे. पण मोर कहबार एटी उद्देश्य होउछि जेतेबेले लॉ तयारी होउछि जणे लोक लॉ तयारी करूना. It is actually decided by तमे जानिथिबो डेमोक्रेसी इज ए डिबेटिंग प्रोसेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये जनक द्वारा इंप्लीमेंटेशन हुएनी सेठी समस्त कोन करंती ना तांकर किछि किछि व्यू देइथांती फॉर पीसफुल पर्पसेस और वार लाइक सिचुएशंस. देखो thus it is perfectly acceptable for everyone to criticize the boss but this concept is not part of Indian system. आमे कोन कहबा धरा जाओ कोनसी गोटे कंपनी की जाओ
कंपनी रो एमडी अछन मैनेजिंग डायरेक्टर तमे एमडी को एगेंस्ट रे केही कहि परिबने आम सीनियर पाछे किंतु प्रकृत रे श्याम चित्रदा कहउचंदी जने ऑफिसर हुंतु गोटे लोअर ग्रेड रे के व्यक्ति विशेष हुंतु जदि केही मिस्टेक करूचंदी ताका एगेंस्ट रे क्रिटिसाइज करबा दरकार जाद्वारा तांका जीवन रे किछि ना किछि चेंज आसी परिबो and it is a progressive stage for any organization or a corporation. So from time to time it is important for an organization's chief executive to get a report on the psychological health of the firm. देखा पिले जेतेबेले मु कहबी हमर टाइम टू टाइम एटी एग्जाम करा जाउची एग्जाम द्वारा किता एग्जाम द्वारा टेस्टिफाई करा जाउची जे हम पिला मानकर स्टैंडर्ड ता बढ़ुची कि न बढ़ुची तमे जानिथिबो हमर पर्टिकुलरली आमे जदि कंसीडर करबा आर्ट्स रो प्रति बैच रे हमर 90% एबव सिक्योरिंग होउची तेणु साइंस पिला मानक भितरे किछि भी अछंती जो माने कि 90% एबव ए वर्ष रखी पारिबे तेणु करी जदि एगेन एंड एगेन हमर कोन कराबो टेस्ट करा जिवो रिपोर्ट करा जिवो पिला माने प्रोग्रेसिव स्टेज को जिबेनी केवल एतिकरे हमरी कोचिंग नुए जे कोनसी ऑर्गेनाइजेशन देखो पिले प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन इवन राउरकेला स्टील प्लांट कथा कहबी सेटे गोटे प्रोडक्टिव बोनस अछि प्रति वर्ष हमें केते प्रोडक्शन करूचे केते प्रति वर्ष हमें बेनिफिट पाउचे सेही अनुसार कोन करूचे कंपनी रा मेंबर मान को असाइनमेंट मिलुची कंपनी रा मेंबर मान को किछि ना किछि बेनिफिट बा बोनस मिलुनी ए दशरा आसीबो दशरा समय देखिबो जो माने फोर्थ क्लास एम्प्लॉय माने थिबे से माने देखला को बहुत पैसा पाइबे जो माने टॉप लेवल एम्प्लॉय तांको पैसा मिलबनी काहे कि ना इनकम टैक्स काट नै जिवो एमति होउनी दशरा को बोनस मिले ना नहीं हाउ पिले देखा so from time to time it is important for an organization's chief executive to get a report on the psychological health of the firm. What is the meaning of a psychological health? Psychological health in the sense the progressive or retrogressive stage of the company. गोटे ऑर्गेनाइजेशन टा प्रोग्रेसिव वे रे अछि कि ऑर्गेनाइजेशन टा रिट्रोग्रेसिव वे रे अछि प्रति वर्ष प्रत्येक प्रोडक्शन सेक्टर रे हमकु जेमि देखिया को पड़े प्रकृति रे हमें प्रोडक्टिव वे रे अछु किबा रेट्रोगेटिव वे रे अछु हमें किछि बेनिफिट आनुछु ना किछि लॉस करूछु सो स्टूडेंट्स हाउ डू पीपल इन द टीम फील आर दे स्टेबल कॉन्फिडेंट सिक्योर कंफर्टेबल जेतेबेले गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो पार्ट आउ पार्सल होचंदी के ना टीम मेंबर्स यदि टीम मेंबर माने एक्सपर्ट अछंती टीम मेंबर माने स्किल्ड अछंती ताले ऑर्गेनाइजेशन ता सक्सेस आनी परिबो ताले गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो टीम मेंबर द्वारा जो टोटली बोर्डम हे जिवे लेजी हे जिवे से ऑर्गेनाइजेशन कोन भलो फंक्शन करिबो नाही तेणु गोटे ऑर्गेनाइजेशन जे हेड रहिले से देखिबे जे साइकोलॉजिकली हमर जे एम्प्लॉय माने रहिले से माने फिट अछंती त मु एग्जांपल गोटे कथा कहि जेतेबेले गोटे ऑर्गेनाइजेशन ने हम रिक्रूटमेंट दबा मु एग्जांपल कहबी गोटे डिटर्जेंट बा गोटे सोप फैक्ट्री जदि गोटे स्किन डिजीज थिबा पिला लोक को सेठी अपॉइंटमेंट दबा से कोन सर्वाइव करिवो सबु जगह रे अपॉइंटमेंट पूर्व तमे देखिबो तम मानक भितर जे सब भलो भलो सिविल सर्वेंट कि टॉप लेवल को गलो तुम साइकोलॉजिस्ट माने देखिबे प्रकृति रे मेंटली तुम स्ट्रांग अछ कि नै से जॉब को आ तापरे तुमरो गोटा मेडिकल टेस्ट हबो तुम देह रे किछि फॉल्ट अछि कि देखिबो जो माने चश्मा हमर पिंजु तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रे सेटा देखिबे आई साइट रो प्रॉब्लम तुम रेलवे परीक्षा दबारे टिके प्रॉब्लम आसीबो किंतु सिविल किबा अलगा लेक्चरशिप लाइन ने किछि प्रॉब्लम नै अर्थात हमको लास्ट स्टेज रे कोनसी गोटे मेडिकल रिपोर्ट दबा को पड़े मेडिकल फिटनेस दबा को पड़े तेणु गोटे जेकोसी ऑर्गेनाइजेशन रो सबुठार बड़ जिनस मन रख तमे जो ऑर्गेनाइजेशन रे जॉइन करिवो तमर साइकोलॉजिकली फ्री रहइबा दरकार साइकोलॉजी फ्री इन द सेंस यू मस्ट बी बर्डन फ्री तम ऊपर कोनसी प्रकार बर्डन न रहउथिबो तुमको बहुत किछि चांसेस मिलिबो डेवलपमेंट करिवा पई यदि ऑर्गेनाइजेशन आमे मेंबर रहउथिबा हम ऊपर एक्सेसिव बर्डन रहउथिबो देन आर देयर वी मस्ट नॉट प्रॉस्पर these are the key elements of a team success गोटे टीम रे सक्सेस में एगुडा होची key elements for a boss to be comfortable accepting criticisms from subordinates he must feel good about himself देखा जे सुपीरियर अथॉरिटी रहिला से मिनिमम कंप्लेन भी दरकार पड़ले सहिया को पड़िबो तमे देखिबा पॉलिटिकल सिस्टम रे जेतेबेले पार्लियामेंट रे हमर डिबेट चलीची मोदी की स्ट्रेट फॉरवर्ड केते कंप्लेन दिया होची से कोन कहछन नै मु चेयर छाडी पळै जिवि नले मु जाबि केस स्टार्ट करिवि तुमको यू मस्ट हैव टॉलरेंस जे ऑर्गेनाइजेशन हेड थिबो ताको बहुत किछि पेशेंस रखिया को पड़िबो बहुत किछि टॉलरेंट रहिया को पड़िबो सेल्फ एस्टीम इज ए की प्री रिक्विजिट टू सच ए सिस्टम बीइंग सक्सेसफुल सबुठार बड़ जिंस होची सेल्फ एस्टीम इन द सेंस सेल्फ रेस्पेक्ट तमे निज निजर आत्मसम्मान को बढ़ाइबो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मु एग्जांपल पेले कहबी
ତମର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ତମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବାଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମର ଇଣ୍ଡଲଜେନ୍ସ ଉପରେ। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ନ କରିବ, ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିସଆର୍ମ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟେମ୍। ତମେ ଗାଁରୁ ଆସିଛ 2 ବର୍ଷ ହବ, ଘର ଲୋକମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହବ, ତମ ରେଜଲ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକିରି ବସିଥିବେ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ ଯଦି ଭଲ ଆମେ କଲେ ତାହେଲେ वी आर गेटिंग द क्रेडिट, ଆଉ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲା वी आर टेकिंग द इनसल्ट, वी आर टेकिंग द रिबुक। तेणु करी आमे जहां भी करिबा जेकोसी प्रकार एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होबा पई, इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल पई सबुठारु बड़ जिनिस होची सेल्फ इस्टीम बा आत्मसम्मान, जोटा कुआ जाय सेल्फ रेस्पेक्ट। So students, another serious problem facing India is the dichotomy and difference in the respectability between physical and mental workers, which seriously affect team performance. आम इंडिया रे गोटे फरक देखा जाए। इंडिया रे गोटे कौन फरक देखा जीवो ना, पर्टिकुलरली आमे देखिबा जो माने फिजिकल वर्कर किए हेले लेबरर्स, मेंटल वर्कर किए ऑफिसर्स। ऑफिसर माने डायरेक्शन देबे, लेबर माने काम करिवे, किंतु मन रख लेबर माने काम करूछंती, ऑफिसर माने भी काम करूछंती, किंतु गोटे प्रकार अंडरमाइन कराय जाय, लेबर मान को टिके अंडर एस्टिमेट कराय जाय। सेति पई हम इंडिया रे बहुत ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हेई पारे ना, which seriously affects the team performance. I had a driver named Ram. मोर गोटे ड्राइवर थिला, ता नाटा थिला कोन राम। राम थिला गोटे ड्राइवर, साम पित्रता कहउछन लिप्सा सुबुचे। I had a driver named Ram who I thought one of the best drivers in the world. राम होची वर्ल्ड रो गोटे बेस्ट ड्राइवर को भीतर गोटे भलो ड्राइवर किए राम। He used to open the door for me whenever he entered or exited the car. जेतेबेले मु कार भीतर बसिया को जीबी से डोर टाको ओपन करिवो कार रो, मु कोन करबी कार रो जेतेबेले बाहरबी से कोन कहबो डोर टाको ओपन कला, जेतेबेले मु कार भीतर बसबी डोर टाको क्लोज करिवो। तार परफॉर्मेंस हैला कोन टू परफॉर्म आज ए स्पेशल ड्यूटी पर्टिकुलरली फॉर मी, मो पई काम करिवो। मु एंट्री करि सरला परे बंद करिवो, मु जेतेबेले चाहबी बाहर को आसिया पई डोर खोलिवो। एति कहउची राम रो परफॉर्मेंस। So students, he used to open the door for me whenever he entered or exited the car. Right in the first few days, I told Ram bhai, you are not going to open the door for me. मु कहली राम भाई तमे आउ कार डोर मो पई खोलनी हैला कि के कहउचंती साम पित्रोदा, राम भाई तमे आउ कार डोर मो पई खोलनी for me. You can't do that you can do that if I lose my hands. यदि मो हाथटा को हरेइली ताले तमे से काम करिवो, अर्थात डोर टा खोलिवो डोर टा को बंद करिवो। राम almost started crying. राम कांदिबा को आरंभ कला। He said, sir, what are you saying? This is my job. एटा होची मोर काम। I told him that I did not want to treat him like a mere driver. मु गोटे ऑर्डिनरी ड्राइवर बोली तांको ट्रीटमेंट करबा को चाहू नथिले। He had to become a team player. अर्थात कार रे आसला परे हमको ऑफिस रे जो छाडू चंदी ऑफिशियल काम रे से किछि इन्वॉल्व होंतु। ऑफिशियल काम रे जदी इन्वॉल्व हेले से ताला हमर गोटे टीम प्लेयर हेई जिवे। I told him that whenever he was not driving, he should come into office and help out with office work. जेतेबेले से ड्राइविंग न करूचंती आसिकरी ऑफिस वर्क रे हमको सहायता करिवे, मेक कॉपीज, फाइल पेपर्स, सेंड फैक्सेस, आंसर फोन कॉल्स or simply read rather than sit in the car and wait for me to show up. जेपंत मु अपियर न होईची कार पकु न जाईची मते वेट करबा अपेक्षा ऑफिस मैनेजमेंट रे ऑफिशियल काम रे जदी से सहायता करिवे इट वुड बी प्रेजोर्दी। Diversifying tasks increases workers self-esteem and motivation and makes them team players. जेतेबेले आमे कामटा को डिवाइड कर दउचे, जने लोक गोटिए पोस्ट रे सब बेले रहिला, सब बेले परफॉर्मेंस करला, अलगा मानक पई सेटा नेग्लिजेंस बोली कंसीडर करा जाय। तनु समस्त जदी किछि किछि रोल करिवे, पार्टिसिपेट करिवे, इट वुड बी ओवरजाइड। Now, even I call him for work in the middle of the night, he is ready because I respect him for what he does. जदि ता काम जो ऑफिस रे कला आमे ताको रिस्पेक्ट देले ताले ऑटोमेटिकली कुह तार गोटे आसी जीव कोन कहलो सेल्फ इस्टीम, आत्मसम्मान, आत्ममर्यादा, जे गोटे मु जो कामटा करूची ऑफिस मो पई किछि लिबरल अछि। टीम इंटरैक्शंस अनफॉर्चुनेटली when good teams do get created almost invariably fall apart। पहले देखा जाए
ଆମର टीम रे जो माने कोन करंती भलो परफॉर्मेंस करंती आमे तांको गोटे स्पेशल कैटेगरी बोली कंसीडर करू अलगा मानकु सेते बेले सबऑर्डिनेट बोली कंसीडर करा जाय बट इट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न in our system today. It is very difficult to build teams because nobody wants to be seen playing second fiddle. What is the meaning of second fiddle? Second fiddle in this sense subordinate. ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହାୟର ଲେଭେଲରେ ରହିବୁ, ଆମେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ରହିବୁ, ଆମେ ସିନିୟର ଅଫିସର ହବୁ, ଆମେ ଲୋୟର ଲେଭେଲକୁ କେବେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ सेकंड फिडल तार भी मीनिंग दे देछि पिले यू कैन गो टू द ग्लोसरी सेकंड फिडल ना देइनी किछि देइनी सेकंड फिडल लिसन सेकंड फिडल इन द सेंस लेस इंपोर्टेंस तमे भी साइड रे लिखले चलिबो लेस इंपोर्टेंस इफ यू लूज सम यू शुड मूव ऑन you don't need to spend all your time and energy of different cultural backgrounds religions ethnicities and caste groups a fertile group of diversity in the workplace आजिकल आम देखू आम इंडिया रे जेते सोशल ऑर्गेनाइजेशन बा परफॉर्मेंस करा जाउची लोक मानक भितर कैटेगराइज करा जाउची कोन कैटेगराइज करा जाउची गोटे जगह रे कंसीडर करा जाउची सबुठी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन धर्म अनुसार कैटेगराइज करा जाउची आउ गोटे रहउची ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटीज एथनिसिटीज माने कोन रूल ऑफ बर्थ किए को एरिया रे जन्म ग्रहण करची सेटा गोटे कंसीडरेशन करा जाउची कास्ट ग्रुप्स आमे सब बेले मन भीतर रही डोमिनेंट कास्ट होचंदी ब्राह्मण लोअर कास्ट होचंदी शूद्र एटा सब बेले पई रही मन भीतर एटा डिफरेंशिएशन करूनी निश्चित रूप से सोशल डिफरेंशिएशन क्रिएट करूची वी शुड एक्चुअली बी एक्सपर्ट्स इन वर्किंग विथ डाइवर्सिटी आमे जे जोटा परफॉर्मेंस करची जो जॉब टा बेले बेले ताको डाइवर्सिफाई करबा दरकार जे आज चेयरमैन हेची काली जने क्लर्क हेची तापर आमे रिमूव करबा अर्थात मोटिवेशन करबा आमे किछि मोबिलाइजेशन प्रोसेस को आसीबा जे चेयरमैन ताको करदबा क्लर्क क्लर्क को करबा चेयरमैन इट इज नथिंग बट एक्चुअली आई फील दैट मोबिलाइजेशन प्रोसेस relating to diversification but it can only happen when we get rid of a personal caste and a community interest जेतବେଳେ ଆମେ पर्सनल इंटरेस्ट को दूरेई दबा ताले समस्त को कंसीडर करबा ऑल आर वन एंड वन फॉर ऑल जेतବେଳେ कास्ट इंटरेस्ट को दूरेई दबा सब कास्ट को हमें कंसीडर करबा एज वन कास्ट जेतବେଳେ कम्युनिटी इंटरेस्ट को हमें दूरेई दबा सब कम्युनिटी के हमें कंसीडर करबा ऑन द बेसिस ऑफ वन रिलीजन there could be a 40-year-old CEO chief executive officer with a 55-year-old VP in the sense vice principal na kona vice president it has nothing to do with age capability and expertise are what counts आमे बेले बेले कौन करू सीनियर मान को सब बेले कौन करू इंपोर्टेंस दो एज अनुसार से एजेड पर्सन ताको आगे कौन करो चांस दियो यंगर माने जेते एक्सपर्ट थिले हम इंडियन सिस्टम रे सोशल सिस्टम रे हम प्राधान्य दउनु बट यू डू नॉट येट सी दिस एटीट्यूड्स टेकिंग होल्ड इन इंडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड कौन तमे बेसी बेले कोन वेरी एटीट्यूड देखौ एटीट्यूड इन द सेंस कोन आउटलुक जने शोइंग अप करबा आउटलुक managers in the US corporate environment who work with Indians and in fact with Asians in general need to recognize that these individuals have a tendency to feel that they are not getting recognition or not being respected अमेरिकन कंपनी रे जो माने इंडियन माने काम करूचंती सेठी इंडियन माने बहुत समय भाबंती जे आमुको किछि रेस्पेक्ट मिलुनी आमुको किछि सीनियरिटी मिलुनी किंतु आम इंडिया रे कोन देखिबो जॉब सेक्टर रे जूनियर रो सीनियर को प्रमोशन अछि ना नाही प्रमोशन अच्छी मु तुमको बोधे कही गोटे थर स्विट्जरलैंड कंपनी कथा स्विट्जरलैंड कंपनी गोटे देख अमेरिकन कंपनी कौन देख क्वालिफिकेशन ने ऑल आर इक्वल स्विट्जरलैंड कंपनी रे जदि जने मैनेजर हम सी एमटेक जने क्लर्क हम सी एमटेक जने स्वीपर हम सी एमटेक जने सुपरवाइजर हम एमटेक आ समस्त सैलरी होची गोटे प्रकार ताल लोकंकर काई सुपीरियर इन्फीरियर फीलिंग आसीबो आम इंडियन सोसाइटी रे अलगा प्रकार जो माने भल काम करिवे आम पई भल सर्विस देबे आमे तांको कहबा फोर्थ क्लास एम्प्लॉय अर्थ बुझिनियो ताले जो लोकर स्पिरिट अछि भल परफॉर्मेंस करिया पई दे आर गेटिंग लेथार्जिक it must be realized that these individuals have lower self esteem to begin with and therefore have to be pampered and encouraged a little more because they need it हां पिले बेले बेले देखा जाए हमर जो माने हायर ऑफिसर माने अछंती सेमानकर एई जो रहउची प्रिंसिपल पाई
पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ गोटे कंपनी बा ऑर्गेनाइजेशन डिबाकल आसे अर्थात कौन हायर ऑफिसर माने बेले बेले अंडरमाइन करते लोअर ऑफिसर मान को आम इंडिया रे देखिबो गोटे ऑफिस रे थिबे हायर ऑफिसर से लोअर ग्रेड रे जो थिबो ताकू जाई कहबे घर काम करिवा पई डोमेस्टिकेटेड जॉब पई कहंती जोटा प्रकृत रे एक्चुअली दिस मेक्स देम फील discouraged or and therefore have to be pampered. Pampered in this and destroyed and encouraged a little more because they need it. This makes them feel better and work better. There is no substitute for teamwork. यदि हमें देखिबा teamwork ର କିଛି substitute ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯଦି combinedly effort ରେ ଲାଗିବା almost all things would be successful. Teamwork is the key to corporate and national governance and to get anything done. जोटी कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छी कॉर्पोरेशन अच्छी जो कॉर्पोरेशन कथा तुम कह जो संगठन बा संस्था कथा कह से जगह टीम वर्क निश्चित रूप रही तुम देख सका समय बहुत जगह प्राइवेट कंपनी मैंने अच्छा मेंबर मैंने सी गोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर रे कौन करते मैनेजर छिड़ा होते सपोर्टर मान रखिथे जो मार्केटिंग कर गोटे इंटराक्शन करुवे हाउ टू बूस्ट देयर इंटेलिजेंस केमिति एक्सपर्टाइज करवा केमिति कौन कर फार्म को डेवलपमेंट करवा केमिति हमें टारगेट को फिलअप करवा so the fundamental issues are respect for others, openness, honesty, communication, willingness to disagree, resolution of a conflict, and recognition that the larger goal of the team as a whole is above individual or personal agendas. The fundamental issues are respect for others. ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ବା ଟିମ୍ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର एग्जांपल मु कहबी बहुत थर भी कही तुम 4 जन कि 6 जन पिला बसिक पाठ पढ़ुच धरा जाऊ गोटे पिला को मैट्रिक्स मैथमेटिक्स आसुनी तुम अंडरमाइंड कर कहबनी तुझे पाठ आसुनी कहीं पढ़ु ये कर देखिए कहबनी तुम करेज दियो एनकरेज कराओ ना आज होनी सांग मु बुझे दिए पुणी थे तू सल्व कर से आकार जब आम फ्रेंड स्कूल रहा आम पाखे आउ कई इनफेरियर रही आम एनकरेजमेंट रे समस्ते एनलाइटेन हो पारे द फंडामेंटल इश्यूज आर रेस्पेक्ट फॉर अदर्स समस्ते समस्त को सम्मान दवा ओपननेस ओपननेस इन द सेंस जिते आम कौन प्रकार पाठ पढ़ा कि गोटे टीम वर्क जावा आम आमर कौन सिक्रेट बा कौन सेल्फ इंटरेस्ट रखिबानी इट ऑट टू बी ओपन इट ऑट टू बी फ्रैंक thereafter honesty honesty in the sense what you are doing with your organization that ought to be epitomized for others तमें जोटा परफॉर्मेंस करूछ से गुडा अलगा समस्त को चांस दियो से माने जेमती परफॉर्म करिवे willingness to disagree पिले जेपर्यंत तुम सैटिस्फाई न होइछ तुम नेगेटिव रोल रुओ किंतु सैटिस्फाई हैला परे परे पॉजिटिव असर्शन शो अप करो लास्ट होउची सॉरी आ गोटे भी रहिची रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आमे मैक्सिमम टाइम जानिचे कौन से इंस्टीट्यूशन हो कौन से ऑर्गेनाइजेशन हो जदि सक्सेस हबो कंप्रोमाइज इज बेटर देन क्वारल आमे क्वारल सम एटीट्यूड रे रहिबानी आमे कंप्रोमाइजिंग रे रहिबा लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकॉग्निशन that the larger goal of the team as a whole is above individual or personal agenda हमको सेल्फ जो रही इंटरेस्ट ताको एप्रिशिएट करिया पड़िबो सेल्फ इंटरेस्ट को वी मस्ट हैव टू डू अवे विथ जा द्वारा कौन हबो ना हमर इंडिविजुअल बा पर्सनल एजेंडा ठार हमें दूरे कि रहिबा हमर कॉमन इंटरेस्ट बा नेशनल इंटरेस्ट ऊपर फोकस करिबा डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्रेशर कहा को हमें प्रेशर देकरी कौन सी प्रकार मोटिवेशन को आनिबानी रिमेंबर दैट प्रेशर इज व्हाट टर्न्स ए लंप ऑफ कोल इनटू डायमंड किंतु मन रखिबा दरकार जदि हमें कौन कले पिले डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्रेशर जदि हम ऊपर प्रेशर न रहिला तमे कहो तमे पाठ पढुछ तम ऊपर प्रेशर नहीं जे पढ़ौछन तांको ऊपर प्रेशर नहीं प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में जो मन मैनेजमेंट करछन तांको ऊपर भी प्रेशर अछि तनु प्रेशर ऊपर हम अफ्रेड होबानी रिमेंबर दैट प्रेशर इज व्हाट टर्न्स ए लंप ऑफ कोल गोटे खंड कोइला लंप होची कोन पीस गोटे खंड कोइला को कन्वर्ट करबा दिने कहउथिरे ना इनटू डायमंड हीरा रे कन्वर्ट करे दी पारे एटा तमर सरिला रिलेटिंग टू हमर द मैजिक ऑफ टीम वर्क लास्ट से पीडीएफ टा लिखा देले छी तोते पीडीएफ देले की देना दी हां आ गोटा पोएट्री सर दबा हाउ मनी मैडनेस पानी पानी
Money Madness, page number 136. Listen, students. Money Madness by D.H. Lawrence. Open your book at 136. Introducing the poet, David Herbert Ricards Lawrence was born in 1885 and died in 1930. He is an English novelist, poet, playwright, essayist, literary critic, and painter. Listen to me. It is relating to the introduction of the poet. D.H. Lawrence is very renowned, and so far as his exponent is concerned, in the field of English novels, poetic temperament, playwriting, and performance towards essays, literary critic. लिटरेचर उपरे बहुत से कौन करते अलगा पोएट मान को क्रिटिसाइज भी करिसन थ्रू हिज एक्सपोनेंट एंड पेंटर से मध्य बहुत गुडा थिले पेंटर इन द सेंस रिलेटिंग टू पेंटिंग इन द सेंस डिफरेंट टाइप ऑफ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स. His collected works represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialization. वर्तमान आधुनिक जुगे रे पर्टिकुलर आम जदि कहबा 20th century onwards it is dehumanizing. Prices of air pollution. The price of air pollution तो बहुत गुड़े रोचे पहले 49 pages relating to 22 paragraphs are there. कौन करिबा पिले कोटा पढ़ेबा पोएट्री हां पोएट्री maximum students have not bought this pdf copy ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜେରକ୍ସ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଲେ ଟା ହବ ନା ଏଇଟା ହାଁ ଅଛି ତ ଭାଇ ବହିରେ ଅଛି ଫୋନରେ ତାପରେ 24 ଭଳି ରହୁଛି ପାରାଗ୍ରାଫର ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇନି ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ପଲ୍ୟୁସନ ନା पोएट्री सारी सारदबा कंप्लीट कर दबा पोएट्री सारदबा अरे पोएट्री सारदबा आज सब जेरक्स करले नेक्स्ट क्लास रे हमें तो
ये कौन की टाइम टेंगे लगे तो पिला कहते पोएट्रीटा पढ़ेले सार दिखाँ नेक्स्ट क्लास पढ़ेगा आम तो मटेरियल आसीगला कौन अच्छी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हिज कलेक्टेड वर्क्स कौन हाँ मुझे देखीदेवी हाँ कहते तो देखी हाउ हिज कलेक्टेड वर्क्स रिप्रेजेंट attentive students page number 136 of invitation 1 his collected works represents an extended reflection upon dehumanizing effects of modernity and industrialization. Modern age is the age of industry. A country is developed because it is developed in industry. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିଛି ରହୁନି ମଣିଷ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛି ମନି ଉପରେ thereby dehumanizing effects of modernity and industrialization. In them, Lawrence confronts issues relating to emotional health and vitality. आ द्वारा कौन होची मनुष्य एभली प्रकार कन्फ्रंटेशन को आसुची he is not actually existing for the benefit of its health sector, rather it is getting to be dehumanizing. And vitality, spontaneity and instinct. Vitality in this sense आमे सब बेले जज करतु गोटे सोशल स्टेटस आम स्टेटसटा केमती भल रही स्पोंटानिटी इन द सेंस डिग्निटी आमे केमती गोटे मर्यादा पाइबा सोसाइटी रे इन द एक्चुअली मॉडर्न सोसाइटी एंड देन इंस्टिंक्ट इन द सेंस इंटरेस्ट ये जो प्रवृत्ति गुड़ाक आम रहा इंटरेस्ट रहा आमको केमती मानविक मूल्यबोध पाखु दूरे दौर मनीष बर्तमान सब गोटे जिन चाहूँ आम केमी कौन मनीटा कौन उपाय आम मनी पाइबा तेणु मनी डेफिनेशन कौन सौम्य व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी can anybody what is the meaning of the definition of money Siddhant what is the definition of money Vishwa Annapurna what is the definition of money मनी बाबद रे बहुत भल भल इंग्लिश रे कोट अछि मनी की आमे कंसीडर करू जनरली लुडन का as a medium of exchange नुहे मनी प्रकृति रे कहा को स्टॉप करेला कॉमन सेंस रो बैटर सिस्टम मनी रो कोट रहउची मनी सेज ऑलवेज earn me forget something time says always follow me forget everything future says always struggle for me forget everything but God says remember me I will give you everything फाइन कोटेशन रिलेटिंग टू मनी तेणु पिले आम तो टंका कथा कहू बर्तमान मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी कह तमें भी निजे भावुव समस्ते जानूव आम रोल आम जी रोल प्ले करुचु भाइटाल रोल मनी नुहे जदि टंका नथिबो इंस्टीट्यूट चली परिबनी जदि टंका नथिबो स्टूडेंट को कोचिंग के आसी परिबनी टंका नथिबो आमे गोटे खाई परिबानी 5 टंका मिल हेले भी 5 टंका आसीबो कोठु तेणु बर्तमान मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी आम सोशल स्टेटस होउची कोन को लोक पाखरे केते पोजीशन अछि आउ से डिटरमाइन करा जाउची जे प्रकृति रे लोकर इनकम केते को ग्रुप रे बर्तमान ये रहिची सो स्टूडेंट्स क्रेज फॉर मनी seems to have gripped the modern world ग्रिप्ट इन द सेंस कवर्ड कबलित करबा आधुनिक विश्व को वर्तमान प्रकृति रे टंकार जो इच्छा टंका पई हमर सब बेले स्ट्रगल चलीची एक्सक्लूसिवनेस चलीची इन टुडेस वर्ल्ड पीपल नीड मनी टू हैव एक्सेस टू थिंग्स आमे जदि कौन सी जगह को गोटे जीवा पई एंट्री करबा हमर जदि प्रकृति रे पोजीशन ऑफ मनी नाही आमे से जगह को जाई परिबा कौन सी जगह रे गोटे पूजा कलेक्शन होउची जदि आमे पूजा पैसा न देछे से जगह को आमे एंट्री करि परुना ताले कुह हमर कौन सी एक्सेस बा एंट्री पई बेसी रोल प्ले रहउची कार मनी सो स्टूडेंट्स without money they are really lost and don't know what to do जदि आम पाखरे टंका नाही we are lost in the sense we are spoiled आमे नष्ट हो जाउचे without money they may end up on the street पिले end up in the sense to round about जदि आम पाखरे टंका नाही रास्ता रे आमे घुरी बोलिबा अर्थात कोन करिबा we must beg for money आमे टंका पई भिख मागिबा The rich are therefore admired for their wealth and prosperity. धनी लोक मान को समस्त प्रशंसा करती कौन पाई
तांको वेल्थ धन पाई आउ प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस कोन डेवलपमेंट बा प्रगति पाई एंड द पुअर आर हेटेड फॉर देयर पॉवर्टी जो माने दरिद्र अछंती तांको घृणा करा जाय कोन पाई ओइंग टू लैक ऑफ मनी वांट ऑफ मनी इन द सोसाइटी एंड एडवर्सिटी तांकर दुर्भाग्य बा दुख पाई but money has not sorry but money has been the root if not of all evil किंतु जदि हमें कहबा मनी रे सब जगह रे केबे ले रूट नाही इविल प्रोपोर्शन रो of a great majority to the human race जदि हमें मनुष्य जाति कथा कहबा टंकार सब गुडा का प्रभाव रे ही सब किछि घटुची सत किंतु अलगा मध्ये किछि किछि फैक्टर रहिछि मनी टर्न्स मैन इनसेन इनसेन होछि मैच टंका कौन कर गोटे लोक को पागल कर जहाँ पाखे अधिका टंका है से राति शोनी काले चोर नहीं जीव अनिद्रा हो पागल है जहाँ पाखे टंका नाही से राति दिन चिंता कला कौट आनिक मो पैसा रखी कमी मैनेज करी फैमिली आज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन से पागल है रीड द पोएम एंड नोट हाउ द पोएट प्लीड्स फॉर ए सोसाइटी विदाउट मनी किंतु प्रकृति में डीएच लॉरेंस कहते आमर गोटे एभली सोसाइटी आम एस्टाब्लिशमेंट करवा जोटे मनी किसी रोल नथिबो जोटा को नेपोलियन बोनापार्ट भी कही गोटे सोसाइटी प्रकृति में फ्रीडम बा लिबर्टी पाइबा केतेबेले जेतेबेले प्रत्येक इंडिविजुअल को फूड मिलिबो बेली की ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लॉथ मिलिबो बॉडी की आम पई शेल्टर मिलिबो एटलीस्ट कॉटेज मिलिबो समस्त को गोटे गोटे फॉर शेल्टर पाई देन एंड देयर वी कैन कंसीडर एज इंडिपेंडेंट तेणु से हिसाब से जदि आमे देखिबा हमर कोन 100% पिला माने को खाइबा कोन सब पिला पाउचंती सब पिला कोन ड्रेस मिलुची ना सब पिला को रहिया पई घर अछि आमे जो इंडिपेंडेंट पाइचे आसीस ओनली वी हैव गॉट द इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलिटी आमे इक्वल अच्छे पॉलिटिकल फील्ड रे मु दउचे 18 वर्ष ले वोट तमे देबो 18 वर्ष रे वोट राष्ट्रपति वोट देबे प्रधानमंत्री वोट देबे सेही जगह रे आमे इक्वल रहिले अलगा को फील्ड रे आमे इक्वल अच्छे वो आज मु कहबी तुम मान भीतर बहुत पिला सीरियसनेस रे बहुत पैसा खर्च करी बहुत लेबर करूछ जेतेबेले जॉब सेक्टर रे जॉब न पाइबो भाबिलो केते सेतेबेले को हारास लागिबो आउ गोटे कथा होची केते भी गवर्नमेंट जॉब आसीबो कोउटू जेति की गवर्नमेंट जॉब धरा जो पोस्ट बाहरिबो केते 500 पिला पकेबे केते 5 लाख तमे तो मैथमेटिक्स रो पिला तमे तो रेशियो टा को देखो समस्त कोन करिवे जळीबे सतिका नियाटा जळुची कीट बा इंसेक्ट जेमति जांदी समेत जीवे किछि सर्वाइव करि जीवे जॉब पाइबे किछि पोड़ी हेकि मरिबे सेति पई आजिकल यंगस्टर माने मैक्सिमम देखिबो तांकर मैडनेस आलानी पागलामी आसिलानी कारण आफ्टर एजुकेशन देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो इकोनॉमी व्हेन देयर इज नो इकोनॉमी देयर इज नो एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ ना कोन कोचिते अपिले मनी इज आवर मैडनेस हाँ टंका पाई आमे समस्ते पागल होइके रहिचे पिले ये दुनिया रे मु भी कहबी तम घरे बाबा जॉब करुथिबे बाबा बिजनेस करुथिबे जहाँ भी करुथिबे राति पाइले गोटे चिंता आम मुंडे आसी पहुंची जे मॉनिटरी थिंकिंग समस्तंकर मनी इज द बाइबल जोटा कहते मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स तमे जदि आज भल कंडीशन अच्छे दैट इज फॉर मनी तमर जदि पुअर कंडीशन अच्छी दैट इज फॉर मनी तमे भी बहुत जगह देखिबो तमर इच्छा शक्ति थिबो पाठ पढ़िया पई किंतु तम पाखरे पैसा नथिबो बहुत ही पॉवर्टी एलिवेटेड पिला अछंती टॉप लेवल को जीवा कथा किंतु ओइंग टू लैक ऑफ मनी दे आर आल्सो नॉट सर्वाइविंग मनी इज आवर मैडनेस आवर भास्ट कलेक्टिव मैडनेस अकॉर्डिंग टू डीएच लॉरेंस मनी इज आवर मैडनेस टंकाटा होची प्रकृति रे हमर पागलामी तुमको जदि किए पचारिबो अरे पिला तू पाठ पढ़ले कौन करू प्लस टू साइंस करे ना मु डॉक्टर हेबी डॉक्टर ले कौन करबो ना मु 3टा खंडा आगे भुवनेश्वर रे अपार्टमेंट करी किए कहबो जे डॉक्टर हेले मु ट्रीटमेंट करबे विदाउट मनी रे तुम मान भीतर कहलो तमे जदि कहबो पैसा नेबेनी तुम फैमिली मेंबर झगड़ा करिवे कहबे तमे हिमालय को पळा पैसा कोन आनिबनी आजिकली सोसाइटी रे जो डॉक्टर मु उदाहरण स्वरूप ले कहबी आकांक्षा गोटे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करिया पे नउची 100 टंका समीक्षा गोटे डॉक्टर ट्रीटमेंट करिया पे नउची 500 टंका प्रियंका गोटे डॉक्टर ट्रीटमेंट करिया पे 1000 टंका नउची कार सोसाइटी रे अधिका डिमांड रहइबो जे अधिका पैसा नउची ए स्पेशलिस्ट फ्रॉम अमेरिका अर्थ बुझी परजन नाही आजिकली पैसा को देखि लोक माने तुलना करना दे तो तमे मु कहबी तमे स्टूडेंट हिसाब रे समस्त समान हेई पारो किंतु सब बेले देख सब जगह रे सोशल स्टेटस रो किछि भी इंपोर्टेंस हाउ मनी इज आवर कलेक्टिव मैडनेस
तामाने समस्तंकर टंका पई किछि ना किछि पागलामी अछि जदि गीता टंका पई पागलामी नथंता ताले कहलो हमर मोहन माझी मुख्यमंत्री से सालारी नौनादी नरेंद्र मोदी बहुत भाषण दौरान से मासक मास दरमा नौनादी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दरमा नौनादी ये समाज रे पैसा का पाखरु मन रख कार निडी नाही बोली कुआ हबनी समस्त पैसा रिक्वायरमेंट रही ସେଇଟା କୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ ମନେ ରଖ our vast collective madness and of course if the multitude is mad multitude in the sense mass बहुत गुटे जनता बा क्राउड जदि मैड हेले the individual carries his own grain of insincerity around with him तमे देख पिले इकोनॉमिक्स रो गोटे टर्म अछि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड आम घर रे जेतिकी इनकम आमे सेतिकी रे चलिबा दरकार इंग्लिश रो गोटे कोट अछि कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर कौन ना कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ तमर आय देखिकी व्यय कर आमे कौन कले आम पड़िशा घर को पळेले तांकर वाशिंग मशीन अछि तांकर एसी अछि तांकर फोर व्हीलर अछि आम घरे जदि बाइक अछि आम घरे डिस्टर्बेंस लागिला तांकर केमति डेवलपमेंट करछने आमे काई डेवलपमेंट करिना सेहिते पई देखिबो एशिया रे लार्जेस्ट डायबिटीज पेशेंट इंडिया यही आमे खाली कौन करछे इन्वॉल्विंग टेंशन आमर जेतिकी जा कैपेबिलिटी रहिला बहुत गार्डियन माने अछंती गोटे साइंस पिलार कैपेबिलिटी अछि से को लाइन रे जाई परिबो किंतु गार्डियन माने कंपल करिवे ना तू डॉक्टर हबु डॉक्टर कोचिंग ने डॉक्टर कोचिंग जदि नबु पाठ पढु नले तो पाठ पढिया को दिबेन अरे ताकू गोटे लिबर्टी दियो ताकू गोटे फ्रीडम दियो से दरकार पड़ले गोटे भलो फिजिक्स लेक्चर होई परिबो गोटे भलो मैथ लेक्चर होई परिबो खाली समस्त डॉक्टर हेबे पेशेंट पुनी किए हबो हां समस्त जदि डॉक्टर हेबे लॉयर पुनी किए हबो समस्त जदि डॉक्टर हेबे पुनी टीचर किए हबो तमे प्लस 2 लेवल रे चिंता करछो मु डॉक्टर हेबी तुम हाई स्कूल टीचर जदि नथान तमे कोन करथांतो प्लस 2 केमे देस्तांतो अरे मन रख प्रत्येक पीढ़ी गोटे रहिबो प्रत्येक सोपान गोटे रहिबो हमर एक्सपेक्टेशन ता मन रख सब बेले लिमिटेड हिसाब रे रहिबा दरकार तेणु आम घर लोक मानकर गार्डियन मानकर पेरेंट मानकर एते एक्सपेक्टेशन रही कि जोटा एक्चुअली बियॉन्ड द सी समुद्र पारी हेला भले एक्सपेक्टेशन अरे आमे नई कूले अच्छे केमती नई पारी हम से कथा को आमे चिंता करबा आम पिला जी जो लेवल रे अछन तामु सेही लेवल रे नियो सेति पई देखुना तम मानकर सब बहुत टेंशन नुई कोचिंग टेंशन घर टेंशन कॉलेज टेंशन सांगसाथी को टेंशन हॉस्टल टेंशन सब प्रकार टेंशन देखि तमे देखो तम बैच पिला मान को मुंह गुडा सब सुखला सुखला दिस के या हस हस मुखा नुए दिस इज द फैक्टर आ ता सब मूले रे किए बुलबुल मनी जदि मु कहबी घर लोक तमे मागुच मासु केते 7000 टंका घर लोक बहुत पैसा अच्छी से कहे 7000 कम मागुचु 21000 ने तुम मन दुख हम प्रतिदिन तुम बर्थडे सेलिब्रेशन कर जदि घर लोक कहे 7000 कौन एत पैसा कहु 6000 ने आर मास को देखा तुम के खर्च काट कर रख भाभी नियो के खाइबाटा कंट्रोल कर मन हो टे बिरीयी खाइबी सब जाकि 20 टकर इटिली आण अर्थ बुझ ना ना आमको निजक निज रिट्रेंच होगा पड़ू ऑन द बेसिस ऑफ आवर इकोनॉमी आम इकोनॉमी अनुसार निजक निज चलिया पड़ू आमको जदि लिबर्टी मिल डीएच लॉरेंस कहते आम किछिटा फ्रीडम दरकार जो गुड़ाक जदि खाइबाटा आमको फ्री रे मिलगला पिंधिबाटा फ्री रे मिलगला आमको जदि रोजगार मिलगला ताले आम पई टेंशन नाही आ पिले नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा हमें टिके रेस्ट नियो बहुत समय पढ़िलो सब चैप्टर गुडा भल चैप्टर नहीं तुम क्या नहीं 10 कॉपी क्या प्लस टू बढ़िया बढ़िया लेसन नहीं मुझे प्लस टू प्लस टू अपेक्षा प्लस टू चैप्टर भल लगे नहीं हमको बुझिया को पड़िबो आमे जानि पन बुझि पन इते एक्सेस ओडिया भी कहा नहीं समय हेबिनी तो
मेरे या चारिଆଡେ